So, my name is Noman Shabu, and I am a student of MSCS. Today, I stand here before you to present my final MS thesis titled Multi-Class Sentiment Analysis of Twitter using Deep Learning Techniques, which I have completed under the worthy supervision of Dr. Imran Shafi. Sir, before I start my presentation, I would like to mention the motivation behind this research and specifically this topic. The idea stem from the unprecedented and exponential growth of uh, data on the social media in present era. As we know, there are billions of users around the globe who are generating massive amount of data on daily basis. Sir, if we talk about the Twitter only, it is generating around 500 million tweets per day. That turns around 6,000 tweets per second. Sir, it is very pertinent to mention that these tweets are not just the random messages. In fact, these are the expression of human behaviors, opinions, and emotions. Sir, with this background in my mind, I feel like that it is the need of the time to understand the public sentiment more deliberately and more precisely. And this understanding, this nuanced understanding, is proven to be invaluable for three kind of stakeholders. First one, for business point of view, if they could have the better understanding of customer sentiments regarding their products, they can manage their market strategies more efficiently. Second is for the good governance point of view. Now, in this area, as we know, governments are also operating themselves and managing themselves through the social media platforms. So, having the understanding of public sentiments regarding various public policies, they can have the better understanding of public feedback. And third is for the societal point of view. Hate speeches and misinformation campaigns required to be proactively monitored to do the profiling of those social media users who are involved in such kind of activities. Sir, since there are challenges in manual analysis, so there is a need of automated way of sentiment analysis. Sir, coming over to the introduction part, sir, let me first formally define the sentiment analysis in the simplest possible way. So, it is a computational technique to identify the human's opinions, emotions, and attitudes from the text. The core purpose of sentiment analysis is to measure the people's inclinations and their feelings towards various entities. अभी सर traditionally there's a problem कि there are many researches that have treated this sentiment analysis as binary or ternary. They classify the sentiments normally in just three classes, that is positive, negative, or neutral. But it is pertinent to highlight that human emotions are not binary. In fact, they are more nuanced. And each kind of emotions demand different kind of strategy. So having the better and the granular level of understanding regarding the sentiment, it gives us the opportunity for targeted decision making. So now if we talk about the number of sentiment classes, so there are various studies available which identify the human sentiments or emotions in various number of sentiment basing on the human psychology. So extracting the knowledge from those studies, from which Ekman's study is the most pertinent one, and from my baseline approach, which I'll discuss further, I have divided the human sentiments into seven classes. And these classes are hate, love, happy, sad, anger, fun, and neutral. So when we talk about these seven sentiment classes, so first we need to know that there are three kind of sentiment spectrum. One is the positive spectrum, and the other is the negative spectrum, and the third one is the neutral. So here in this research, both negative and positive spectrums are further divided into three kinds of sentiments to strike the balance. Positive spectrum is divided into love, happiness, and fun. And in the same way, जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम है वो भी फर्दर डिवाइड किया गया है हेट सैडनेस और एंगर में. सर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं इसमें आई इंटेंड कि मैं किसी एक सेंटीमेंट किसी एक पॉलिसी के ऊपर बात करूं और लोगों के जो ट्विटर्स के ऊपर ट्वीट्स आते हैं उनके सेंटीमेंट्स के ऊपर मैं इसके ऊपर विजुअलाइज करवा सकूं. सो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ public sentiment on new education policy. So one kind of a tweet is, I absolutely adore the new education policy.
By analyzing these words used in this tweet, we can clearly differentiate that it belongs to the sentiment class love. The other kind of a tweet on the same policies like this. So pleased to see the government investing more in teacher training and school infrastructure. And so this tweet belongs to sentiment class happiness. And the next one is the new education policy focus on sports and arts is so exciting. So it belongs to sentiment class fun. So in the same way, the negative spectrum, we can see the tweets are showing different sentiment classes and basing on their polarities, they belong to hate, sadness, and anger. So having the knowledge of sentiment granularity, we can see that different kind of response is required against different kind of sentiments class by respective stakeholders as I discussed earlier in my previous slide. Thank you. Sir, so having this background, it is important to know that what has already been done in the realm of sentiment analysis. Sir, I have researched numerous research papers from various reputable journals in the past 10 years. It has been observed that around 95% of the researches are based on binary and ternary classifications. Moreover, it has also been figured out that 70% of the papers use classical machine learning models and only 25% of the papers use deep learning models. And looking specifically towards the deep learning techniques in the recent past in terms of sentiment analysis, none has addressed 7-class granularity. So, sir, now coming over to the literature review of my baseline paper. This paper is written by Inder Bazizi, published in a top-tier journal with an impact factor of 7.7. So it tackles 7-class sentiment classification on Twitter, and this fills a major gap since most researchers haven't done multi-classification and sticks themselves to binary or ternary classification only. In this research, the author developed a tool, Senta, which is used for the feature extraction. And ultimately, he applied a machine learning model on it. And result accuracy is 60.2% on 7 classes. To show the difficulty of multiple sentiment classes, he also tested the model on binary classification and achieved 81% accuracy. So moving from two classes to 7 classes, it caused a 20% accuracy drop. So while this paper made important contributions, but there are several significant gaps which remain here. The foremost gap is the limited accuracy of 60.2%. This low performance has two main causes. First, the inherent complexity of multiple classes, because it is difficult to distinguish emotions overlap between various sentiments, like those sentiments which are very close to each other, like anger and hate and happiness and fun. This creates definitely a confusion. Second, the limitation of machine learning models. It cannot understand I do not love this is different from I love this, because it treats words as an unordered collection. So therefore, sequential processing is needed to handle negation and context. Sir, in this slide, I draw a top-tier picture regarding the overall research gap in the domain which I have researched. So limitation exists in the fine-grained classification of sentiments, and earlier research focused on binary and ternary classification, and it usually, once we divide the human emotions in two classes, it gives a 70% loss of information when we are oversimplifying the human emotions. So machine learning models are dominating the current literature to perform sentiment analysis. So there exists a granularity gap, methodological gap, and the application gap as well. So in the methodological gap, we can see as we choose 7 classes. So classifier, whatever the classifier will choose, that must learn to distinguish between every possible pair of classes. That becomes 21 boundaries, and then the classifier has to learn it. So after reviewing the literature review and based on the identified gaps, I can now formally state the research problem this thesis addresses and then the specific objectives
I set out to achieve. So given the problem statement is given a set of tweets that are said perform multi-class sentiment analysis using the deep neural networks to predict sentiment classes basing upon tweets polarity. Sir, the mathematical interpretation of my problem statement is rho is the set of tweets. This is my data set. Lambda is the target of sentiment class. That is those 7 sentiment classes that we discussed in previous slides. And phi is input tweet that belongs to set of tweets. And the set of tweet is rho. Psi belongs to the range lambda, sir. This is one of my predicted sentiment class. So mathematical interpretation of a given tweet after the implementation of the model is rho of phi belongs to psi. Sir, coming over to my research objectives. Paul. हम इसमें स्केल करके ना पेशेंट की इसके ऊपर स्लाइड नंबर रखा so insert by उनका सेशन भी रिस्टार्ट कर देगा सर 3:15 तक है चल रहा है जी सर चल रहा है 3:15 तक है स्टूडेंट सेवन का सेवन हो सर एक स्टूडेंट राबिया मलिक नजर आ रही है जी सर से आवाज आ रही मैम राबिया कैन यू हेयर मी You are audible. hello am I audible hello You are audible. You are audible. ma'am Rabia can you hear me रिकॉर्ड कर रहे हैं सर रिकॉर्ड करूँ सर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स सर उनका मैसेज आया यू आर ऑडिबल So the objective one is to formulate the data set into a format compatible with my selected deep learning model. And I have selected long short-term memory neural network as my deep learning model. And this stage involved cleaning, preprocessing, and ensuring balanced representation across these 7 classes. So the second objective is to design and implement an LSTM neural network architecture specifically optimized for 7 classes, 7 sentiment classes. This includes selecting appropriate hyperparameters, implementing the word embeddings. I have used Stanford Globe embeddings, word embeddings. And the third objective is to quantify the sentiment polarity for each tweet and assign labels based on the predicted probabilities. So essentially, as the model processes a tweet, its output 7 probability scores, 1 for each class, and we assign the sentiment class to the tweet with the highest probability. और सर जो मेरा चौथा ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैं एवेलुएट कर सकूं अपने मॉडल के रिजल्ट्स को विद सम केपीआईज और जो कि मैंने सेलेक्ट की हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर since we need a comprehensive metrics so we cannot rely only on accuracy so therefore there are other KPIs are also included. So after fulfilling all the objectives, I'll compare my results with the baseline approach that I have shown in previous slide. Sir, let me now present the insights of the methodology that I adopted, which I call the Tweet Sentiment Analysis Model or TSAM. So this slide shows both the high-level framework and the detailed workflow. The methodology, so the methodology begins with our tweet space, which is a finite data set of tweets that have been manually annotated. We start with the input file containing our raw tweets. In the tweets space, we perform several crucial operations. First one is cleaning. It will remove URLs, hashtags, special characters, retweets, indicators, and emojis. Second, in the filtration stage, it apply word filters to remove stop words
and the relevant vectors. Then सर टोकनाइजेशन की बारी आती है, तो जिसमें ये करता ही है कि कन्वर्ट कर देता है तमाम ट्वीट्स को वर्ड टोकन्स के अंदर, और शफलिंग की जाती है ताकि एक बैलेंस बैचेस ट्रेनिंग के दौरान दी जा सकती हैं। सर द क्लीन डाटा the clean data is then split into the training and the test data set. So specifically, we are using around 40,000 tweets from the Crowdflower data set, split into a training set of 28,000 tweets and the test set of 12,000 tweets. ये जो splits है सर, ये इंश्योर करता है कि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी इनफ डाटा मौजूद है, and we have a substantial set of data for unbiased evaluation. So coming over to the next step, that is the word embeddings. So each token is mapped to a 200 dimensional dense vector. और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमने इसके लिए यूज किया सर स्टैनफोर्ड प्री-ट्रेन्ड ग्लोब एम्बेडिंग, and you can see the mathematical representation log of probability ratios which capture the semantic relationships. Next is the feature vectors. The feature vectors then are fed into our model, which is the LSTM based multi-level classification system. The LSTM processes the sequence of words vectors. It captures the contextual dependencies, or it outputs a probability distribution over the 7 sentiment classes. और afterwards सर ये जो मॉडल है it will make predictions, और उस जो predictions होगी सर उनके ऊपर फिर हम अपनी KPIs को लगाएंगे, जो कि accuracy, precision, recall और F1 स्कोर है, और अपने रिजल्ट्स हम तरतीब देंगे. सो ये जो मेथोडोलॉजी है सर, ये एक एंड टू एंड पाइपलाइन है, जिसमें एक बड़ा ही रॉ और नॉइजी डाटा से हमने स्टार्ट लिया है, और उसके बाद हम इसको एक इंटेलिजेंट फीचर एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमने एम्बेडिंग्स इसकी की हैं, और आफ्टरवर्ड्स हमने इसको एक रिजल्ट्स की तरफ लेकर आए. सो सर ईच स्टेप इज रियली क्रूशियल. I mean, if we skip the pre-processing phase, our model will train on noise. If we skip the proper embeddings, our model will lose the semantic meaning. And if we'll skip the proper evaluation, then you don't know where your model actually works. Sir, next slide is, let me walk you through the detailed implementation of the first 3 stages of my methodology. In the first stage, we utilize the Crowdflower dataset. जैसे कि पहले बात हुई, इसमें 40,000 के करीब annotated tweets मौजूद हैं. Let me show you my dataset, sir. This is the sir dataset available, and this is available for each class. This is the datasets. Sir, this data is split into training and test data set, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से की गई है कि ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्वीट्स हमें मिले. और जो सर स्टेज 2 है, दैट इज आल्सो वेरी क्रूशियल, क्योंकि रॉ डाटा जो इसमें है वो नॉइजी डाटा जो है वो डिफरेंट लेंथ्स का भी है, तो उसको एक लेंथ पे लाने के लिए इस स्टेज में पैडिंग की गई है, और इसको 140 टोकन्स के ऊपर लेकर लाया गया. क्योंकि जो मेरे पास डेटा सेट अवेलेबल है सर, ये 140 कैरेक्टर्स का था, क्योंकि ट्वीट्स की जो पुरानी लिमिट थी डेट 140, नाउ मेरा ख्याल में ये 280 के करीब आ गई. थर्ड स्टेज के अंदर सर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने वर्ड्स को नंबर्स के अंदर, और इनके मीनिंग्स को कैप्चर करेंगे, और जैसे कि हमने जिक्र किया कि हमने प्री ट्रेन्ड ग्लोब वेक्टर्स को यूज किया. सर नाउ मूविंग टू द स्टेज 4, दिस इज द एक्चुअली द मॉडल दैट आई हैव यूज्ड. सर अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, तो ये एक RNN मॉडल को दिखाया गया है सर. जिसके अंदर हो ये रहा है कि RNN कर ये रहा था कि वो सीक्वेंसेस को, जो सीक्वेंशियल डाटा था, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझता था, और इस तरह समझता था कि इसके अंदर एक हिडन मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो कम इनपुट वाला, कम कंटेक्स्ट, कम इनपुट के साथ जो डाटा आता था उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता था. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट सीक्वेंसेस, लेकिन जैसे ही लॉन्ग सीक्वेंसेस के अंदर हम जाते थे तो ये एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता था.
और उसकी वजह से ये थी कि जब भी बैक प्रोपेगेशन होती थी और वेट्स आपके दोबारा से खुद को इम्प्रूव करते थे तो रीएडजस्ट करते थे, तो उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का इसमें प्रॉब्लम आ जाता था, जिसकी वजह से ये आरएनएन के बाद एक इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस इशू एक स्पेशल काइंड ऑफ ए आरएनएन दैट इज नेम्ड एज एलएसटीएम उसको डिजाइन किया गया था. सो इट इज डिजाइंड, जो एलएसटीएम है सर, इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर सीक्वेंशियल डाटा लाइक टेक्स्ट. और जो की इनोवेशन है सर इसके अंदर, that is its ability to remember important information over long sequences और फॉरगेट कर देता है ये irrelevant डिटेल्स को. और ये काम सर अपने मेमोरी सेल्स के थ्रू करता है. और इसने इंट्रोड्यूस किए थे 3 गेट्स को जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. और ये गेट्स जो थे दे जस्ट वर्क लाइक अ सेमी स्मार्ट कंट्रोलर्स. सो अगर सर हम इसके गेट्स का वर्किंग मैकेनिज्म को देखें तो जो फर्स्ट गेट है दैट इज द फॉरगेट डेट, जो डिसाइड करता है, दिस वन इज द फॉरगेट गेट्स, जो कि डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे संभाल के रखनी है. और सर ये इसके अंदर ये सिग्माइड फंक्शन को हम देख सकते हैं जो कि आउटपुट देता है बिटवीन 0 and 1. और 0 मीन्स दैट यू नीड टू कंप्लीटली फॉरगेट द इंफॉर्मेशन एंड 1 मीन्स टू जस्ट कीप एवरीथिंग. सो इस गेट्स के कॉन्सेप्ट्स ने इट एलिविएट्स द gradient vanishing gradient problem that are being faced earlier in RNN. So इसके बाद सर इनपुट गेट है. इनपुट गेट डिटरमाइन करता है कि वो कौन सी नई इंफॉर्मेशन है that is required to be stored. So और फाइनली सर एक आउटपुट गेट है that controls what information needs to be passed to the next step. जो ऊपर सर हमें लाइन ये नजर आ रही है, ये सर मेमोरी सेल है जो कि ये प्रीवियस टाइम स्टैम्प का मेमोरी सेल है सर. और ये जो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प को हम मेमोरी सेल देंगे, इट स्टोर्स एंड अपडेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. और इसके अंदर सर हिडन स्टेट है दैट बिकम्स द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट वर्ड to the next cell. So this is how this information is stored, updated, and forgotten in a LSTM, and it is making a suitable choice for handling the sequential data and preserving the long-term contextual dependencies. इसके बाद सर before diving into our results, let me walk you through the hyperparameter setting which I have used. Sir, understanding these hyperparameters is crucial because each one plays a specific role in how our model learns and predicts emotions from tweets. Sir, at the core of our implementation, we have used TensorFlow integrated with Keras, जो simplify करता है सर प्रोसेस बिल्डिंग को और डीप लर्निंग मॉडल्स को एफिशिएंटली और इसकी कंप्यूटेशनल वर्कलोड को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है लाइब्रेरीज. इसके अलावा सर जो टोकनाइजेशन है वो कन्वर्ट करती है रॉ डाटा को टेक्स्ट के अंदर. हमारे पास सर जो डाटा सेट में टोटल वोकैबुलरी जो थी दैट इज 29,000 यूनिक वर्ड्स जो कि हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर मौजूद थे. और ये तमाम फिर इसको अल्टीमेटली पैडिंग की गई है इसको 140 कैरेक्टर्स के ऊपर लाने के लिए, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क को एक तरह का एक कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट उसको चाहिए. और फीचर इंजीनियरिंग के अंदर सर हमने 200 डायमेंशनल एम्बेडिंग को यूज किया है जो कि कैप्चर करती है सिमेंटिक रिलेशनशिप को. और इसके बाद सर अगर आगे चलते हैं तो टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग हमने सर अप्लाई किया है, वी हैव अप्लाई अग्रेसिव ड्रॉप आउट एट 70% अक्रॉस द लेयर्स. और इस ये सर ड्रॉप आउट मीन्स कि रेंडमली इसने डीएक्टिवेट किया है न्यूरॉन्स को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और ताकि our model can learn the robust patterns rather than just memorizing the specific examples. For our model structure, हमने सर इनके ऊपर आउटपुट के अंदर सॉफ्टपैक्स एक्टिवेशन फंक्शन को यूज किया है ताकि एट द आउटपुट लेयर टू प्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस आर 7 इमोशन क्लासेस. और सर लॉस के अंदर सर कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज किया गया है ताकि मैयर किए जा सकते हों एरर्स को. और ऑप्टिमाइजर सर हमने एडम ऑप्टिमाइजर को यूज किया गया जो कि वेट्स को अपडेट करता है. सर वी ट्रेन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 20 एपॉक्स विद बैचेस ऑफ 1 to 8 सैंपल्स. और जो पेशेंस पैरामीटर्स है that is 7. इट मींस if that will stop early if validation doesn't improve for 7 consecutive epochs. So ये जो combination है सर, ये जो hyperparameters का combination है, it has prevented us both from overfitting and
from underfitting. Sir, so now let's explore how we evaluate our model performance. Sir, we measure performance using 4 key metrics. और ये जो confusion matrix है sir, that help us to visualize where the model succeed and where it fails. The positive and the true negative shows correct classification, और जो false positive और false negative हैं that tell us incorrect predictions जो कि इस मॉडल ने की हैं. सर जो accuracy है सर, that tells us how often the model predicts results are correctly identified. This is the overall percentage of the right predictions out of all predictions. और जो precision है, that is focus on how many of the tweets predicted as positive are actually positive. Recall, sir, focus on how many of the actual positive tweets the model was able to find means how well the model captures all actual positives. और सर जो F measures है, F measure है, it strike a balance between both precision and recall, giving us a single score that accounts for class imbalance. So these metrics together paint a complete picture of model performance. By understanding these metrics, we can diagnose exactly where our model performs well and where it struggles. So, sir, now let me share our actual performance results across all 7 sentiment classes. Sir, overall, our model achieved an average accuracy of 76% across all classes. However, performance varies significantly across various classes. For example, the hate class, it has performed exceptionally well with 89% accuracy, 98% precision, and 93% F measure. It makes sense since the hateful content, it uses explicit and distinctive language having clear linguistic signatures. That was easier for the model to identify. इसके बाद सर आगे चलते हैं तो न्यूट्रल क्लास जो है ना, it shows an interesting pattern. सर इसने 76% एक्यूरेसी शो की है और सिर्फ 52% प्रिसीजन इसने शो की है. इट मींस कि जब भी मॉडल न्यूट्रल क्लास को प्रेडिक्ट करने जाता है तो ये सिर्फ हाफ अ टाइम सही साबित हुआ है. ये जो मिसक्लासिफिकेशन हुई है सर, द मॉडल मिसक्लासिफाई अदर माइल्ड सेंटीमेंट्स एज न्यूट्रल, क्योंकि जो बाकी माइल्ड सेंटीमेंट सर हमें नजर आए हैं वो सारे इसने न्यूट्रल में कंसीडर करता है. एंड इट इज यूज न्यूट्रल एज अ डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर एम्बिगुअस केसेस. सर आगे चलें तो ये जो फन और सैडनेस क्लास है, they are also underperformed, showing the lowest accuracy, and it is attributed to the semantic overlap between fun and happy and or sadness and anger, and it is making them harder to differentiate. So now, sir, if we talk about where sentiment classes confuse with other classes, sir, the table on the right side is showing the misclassification pattern with the base class. हम देख सकते हैं सर कि जो एंगर क्लास है उसने मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज किया खुद को सैड क्लास के साथ. और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो लो प्रिसीजन न्यूट्रल की है वो इसलिए है कि सर हम इस टेबल में देख सकते हैं कि एवरी क्लास हैज कंफ्यूज इटसेल्फ विद द न्यूट्रल क्लास. और इसके अलावा सर जो फन क्लास है सेकंड पे, fun class, it has misclassified itself with the happy with fun, hate with sad, love with happy, neutral with happy, and sad, and lastly sad with hate. So जो tables are on the left hand side, it also showing misclassification percentages. Okay, for example, अगर मुझे एंग्री क्लास में 77% मुझे एक्यूरेसी मिली है तो वो मिसक्लासिफिकेशन में जो बाकी 23% इसमें जो नहीं मुझे मिल सकी वो किन क्लासेस में डिवाइड हुई है. So, sir, these results reveal that our model is generally strong, but challenged phase in distinguishing similar emotions, most importantly, fun versus happy and anger versus sadness. And it indicates that semantic similarity is our model primary struggle. Sir, इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो the most important indicators of model health is how training and validation metrics behave over time. So let me explain what these curves tells us. So these graphs showing training and validation accuracy and loss across all 20 epochs.
और हम नोटिस कर सकते हैं कि सर ये जो हमारी बोथ ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी है, दे मूव टुगेदर, दे इंक्रीज इन पैरेलल, और जहां पर लॉस हुआ है दे डिक्रीज स्मूथली इन टेंडम. So this synchronized movement is exactly what we want to see. The curves are smooth with no sudden spikes or divergences, which tells us the model is learning consistent patterns rather than fitting randomly to the data. It indicates stable and healthy learning. So most importantly, there is no overfitting evident here. If the model were memorizing the training data, uh, we will be seeing training accuracy continue to improve while validation accuracy plateaus decreases. Instead, both metrics improve together, suggesting the model is learning generalizable features. और ये जो सक्सेस है सर, इसको एट्रीब्यूटेबल है मल्टीपल हाइपर पैरामीटर्स के साथ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रॉप आउट पैरामीटर के साथ. 70% ड्रॉप आउट जिसका रेट हमने यूज किया था, जिसने इसको मॉडल को मेमोराइज नहीं होने दिया. और जो स्मूथ ट्रिजेक्टरी मींस आर हाइपर पैरामीटर चॉइसेस वर वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वी आर neither underfitting nor overfitting. अभी सर आगे चलते हैं, और वी नीड टू वैलिडेट आर डीप लर्निंग अप्रोच वाज द राइट चॉइस. तो हम इस LSTM रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे अपने बेसलाइन मॉडल के साथ. तो वी कैन सी के जो हमारे बेसलाइन मॉडल की एक्यूरेसी थी, दैट इज अराउंड 62, अराउंड 60.2%, और इसकी 76% है. तो देयर इज अ इम्प्रूवमेंट ऑफ 16% जो कि हमने यहाँ पर अचीव की है. इसके अलावा सर अगर हम क्लासेस वाइज चलें तो व्हाट वी कैन सी इज के एंगर के केस में LSTM ने अचीव की है 77% एक्यूरेसी, और जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है उसने 62% अचीव की है. और हेड क्लास के अंदर इसी तरह से दोनों हेड क्लास में से दोनों दोनों मॉडल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है. तो इसका बल्कि जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसकी 91% एक्यूरेसी आई है, जिसका मतलब ये है कि जो ड्यू टू द लिंग्विस्टिक ग्रामर जो कि हेड क्लास में यूज हो रही हैं, वो कोई भी मॉडल उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है. और इसके बाद सर वी कैन क्लियरली सी बेसिंग ऑन दिस टेबल कि जो रैंडम फॉरेस्ट है, इट हैजंट कैप्चर्ड द सीक्वेंशियल एंड द contextual nature of how emotions are expressed in tweets as effectively as LSTM recurrent architecture. सर अभी ये कंपैरिजन अब हमारा QPS बेस्ड है. इसमें जस्ट हम देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट अराउंड 16 to 20% enhancement रिस्पेक्टिव KPIs में इस मॉडल ने हमें दी. अच्छा सर, अभी जो चैलेंजेस सर हमें इस मॉडल को फिगर करने के दौरान फेस हुए हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करें, हम ये बात कर सकते हैं कि हमें 76% ही रिजल्ट्स क्यों मिले हैं, हमें इससे बेहतर रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले. तो देयर आर फ्यू चैलेंजेस जो कि हमें मिले हैं, जो कि मैं यहाँ पर शो करना चाहूंगा. फर्स्ट इज द कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी. तो कुछ ट्वीट्स जो हैं सर, वो रिप्लाईज हैं पुराने ट्वीट्स के. तो फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर देयर अ ट्वीट, आई रिमेम्बर समवन सेइंग इट्स गोना बी फन. So ये appears a neutral on its surface, but actually express as anger, disappointment. अगर हमें इसके पिछले ट्वीट जिसके रिप्लाई में ये ट्वीट किया हुआ है, अगर उसका भी हमें कंटेक्स्ट पता हो तो. सेकंड सर, पॉलिसिमी है. पॉलिसिमी मीन के एक वर्ड के डुअल मीनिंग्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैड फन का वर्ड यूज किया गया है. अब मैड का मतलब ये है कि ये इंटेंसिफायर सॉर्ट ऑफ मीनिंग देता है, और ये एंग्री की तरफ लेके जाता है. हालांकि इसमें जो मैड है, मैड को वेरी की जगह यूज किया गया, तो वेरी फन. तो इसलिए इसको फन की तरफ जाना चाहिए था. इसके अलावा सर जो तीसरा है, थर्ड इज द मल्टीपल सेंटीमेंट्स. फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्वीट, आई विल मिस यू, लव यू. इट कंटेन्स बोथ सैडनेस एंड लव. एक ही ट्वीट के अंदर दोनों तरह के सेंटीमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है. इसके अलावा सर सेंटीमेंट सिमिलैरिटीज है हैप्पीनेस और फन के बीच में, एंगर और हेट के बीच में. दैट इज आल्सो डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश. और फाइनली सर वीक इंडिकेटर्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट अ रियल चैलेंज. फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्वीट दैट श्योर इट वाज, इनवाइट मी अगेन. सो इट एक्सप्रेस हैप्पीनेस, बट इसमें हैप्पी के एक्सप्लिसिट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है. सो इस वजह से डेट भी ऐसा वर्ड है, इनवाइट अगेन भी ऐसा वर्ड है, जो कि मॉडल को सैडनेस की तरफ लेके चला जाता है कि वो इसकी सेंटिमेंट क्लास सैडनेस को ईयर मार्क करे. सर नाउ लेट मी शो यू
why this research matters by highlighting its some of real world application or use. Sir, we know that we are due to the considering the prevailing security situations, governments need to monitor the public opinions on sensitive issues like government policies, services in real time. So इसके अलावा सर जो organizations है, they can use the sentiment analysis model to identify multi-class emotional reactions to their products, जो कि business organization अगर कोई हमारी, और companies can analyze the customer feedback with much greater precision ताकि वो accordingly strategic decisions उसके ऊपर ले सकते हो. So this application show that understanding emotions in social media is not just academic. It has immediate practical value for organizations across various sectors. Sir, that's all from my side. One protocol going on in the कोशिश की है कि जो चीजों की नॉलेज के साथ because the research depends more than the results. What matters is we are here to change that you fall on that level level how many masters you really want just you. It's not only about change. So from that perspective, the slides we are considered and prepared well, which is good. So let's get on with certain. So you're using certain terminology. I think sometimes also in a variable manner. These were not in a specific sequence. First of all, आपके abstract है, उसमें आपने लिखा है कि sentiment analysis के लिए जो है वो classical techniques use होती है. For example, linear regression, naive Bayes theorem, and method of thinking. So, how is linear regression used for sensitivity analysis? सर बेसिकली जो लीनियर रिग्रेशन है, हमें जो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर एंड के ऊपर जो आपने सेंटिमेंट क्लासेस की क्लासिफिकेशन करनी है, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर सर लीनियर रिग्रेशन तो अदरवाइज भी मशीन लर्निंग के अंदर यूज हो रही है. जो क्लासिकल हमारे मॉडल्स हैं जितने भी ये इसमें कुछ जिक्र भी किया